ये हमारे पास एक क्वेश्चन है गेट केमिकल 2024 से। द रेशियो ऑफ एक्टिव एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज 1000 Kelvin. The temperature dependence of the reaction rate constant follows the collision theory. The ratio of the rate constant at 600 Kelvin and 400 Kelvin is। और ये हमको चार ऑप्शन दिए हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोलिजन थ्योरी क्या होती है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है सर, हमारे पास तीन थ्योरीज होती है जो भी हमारा रेट कांस्टेंट होता है उसको अलग अलग टेम्परेचर पे निकालने के लिए। उसको हम इस जनरल इक्वेशन से प्रेजेंट करते हैं। इसमें जो m है वो तीनों जो थ्योरीज हैं उनके लिए अलग अलग होता है। m की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है अर्हीनियस लॉ के लिए। m की वैल्यू होती है 1/2 कोलिजन थ्योरी के लिए। और m की वैल्यू 1 होती है ट्रांजिशन स्टेट के लिए। स्पेलिंग के लिए सॉरी। सो ये हमारी तीन इक्वेशन है और इसकी तीन थ्योरी। हमें बोला गया है कि जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो रिएक्शन है वो कोलिजन थ्योरी को फॉलो कर रही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी k बराबर k0 t की पावर m e की पावर e की पावर माइनस e बाय आर टी। सो इसको हमको रेशो पूछा गया है, रेशो ऑफ 600 केल्विन एंड 400 केल्विन पे जो रेट कांस्टेंट है उन दोनों का रेशो पूछा है। तो हम इस टर्म को रेशो में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो K2 बाय K1। तो K2 बाय K1 में जो क्या क्या टर्म चेंज होंगी हम उसे देख लेते हैं। इसमें K0 तो सेम रहेगा और जो एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। जो चीज़ चेंज हो रही है यहाँ पे वो सिर्फ टेम्परेचर है। In any given reaction, regardless of the temperature, the activation energy remains same unless a catalyst is used. So K2 is equal to K0 T2 पावर 1/2 होगी कोलिजन थ्योरी के लिए 1/2 e to the power minus e by r T2 डिवाइड बाय K1 is equal to K0 T1 की पावर 1/2 e to the power minus e by r T1। K0 से K0 कैंसिल हो जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं K2 बाय K1 इज इक्वल टू T2 पावर 1/2 e टू द पावर माइनस e बाय r T2 डिवाइड बाय T1 पावर 1/2 e टू द पावर माइनस e बाय r T1। अभी जो एक्सपोनेंट के फॉर्म में इसे हम नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए ln यानी लॉग का इस्तेमाल करते हैं। तो log K2 बाय K1 इज इक्वल टू log T2 1/2 e टू द पावर माइनस e बाय r T2 डिवाइड बाय T1 पावर 1/2 e टू द पावर माइनस e बाय r T1। नाउ विल सॉल्व इट। सो ln K2 बाय K1 is equal to ln we can separate this by writing T2 power 1/2 e to the power minus e by r T2 minus ln T1 power 1/2 e to the power minus e by r T1। So this is property of logarithm, subtraction property. Now we again can separate this two terms by using another property of log. So ln T2 1/2 plus ln e to the power minus e by r T2 minus ln T1 power 1/2 plus and plus minus will be minus, so it ln e to the power minus e by
RT1. Now further solving it, the power rule for log, we can write this as 1 by 2 ln T2 minus E by RT2 ln E minus 1 by 2 ln T1 minus of E by RT1 T1 into ln E. Now we will further solve it. So we'll get ln K2 by K1 is equal to 1 by 2 ln T2 minus T1. We have merged the two terms, this and this, like subtraction property, this divided by this will be equal to this term, and similarly we can write plus E by R 1 by T1 minus 1 by T2. So this is the final form for the collision theory. Ln K2 by K1 is equal to 1 by 2 ln T2 by T1 plus E by R 1 by T1 minus 1 by T2. Now in the question we have been asked to find out the ratio of rate constant for temperature T is equal to 600 Kelvin and T is equal to 400 Kelvin. So in the expression we have K2 divided by K1, so we can write this as T2 and T1. For simplicity's sake, we will take this as T2 and this T1. So we'll put the values in the formula. And another thing what we have been given in the question is the ratio of E by R, that is 1000 Kelvin. So we'll put the values of the terms in the expression. So we'll get ln K2 by K1 is equal to 1 by 2 T2 is 600 Kelvin divided by 400 Kelvin. This will be a dimensionless term, plus E by R is given 1000 Kelvin, 1 by T1 is 400 minus 1 by 600. So ln K2 by K1 is equal to 0.5 into 6 by 4 is 3 by 2 ln. So ln 3 by 2, that is 1.5 plus 1000 Kelvin into we'll solve this fraction as 400 into 600 minus 400, so 3 zeros cancel. Ln K2 by K1 is equal to 0.5 ln 1.5 plus 200 by 40 into 6, 10 to 5. So ln K2 by K1 is equal to 0.5 ln 1.5 plus 5 by 6, so 5 by 6. So if we find out these values by the calculator, the digital calculator is given in the gate. I have calculated this from my personal computer calculator, sorry. So the values are coming out as 0.5 into 0.4054 plus 0.8333. If we add these values, we'll get 1.036. That term is equal to ln K2 by K1. Now we have been asked the ratio of K2 by K1. So we'll remove this ln by raising this power to E. So K2 by K1
is equal to e to the power 1.036. If we calculate this by calculator, we will get 2.8179, which is approximately 2.818. Now if we match this value from our given options, so we have option 1 is the right answer.